Good morning, one and all. And today we are going to concentrate, we are going to learn, we will take the information regarding with construction of Pelton wheel turbine or Pelton turbine. Now, the figure is in front of you. And this figure, if you will concentrate, you will come to know that figure is very easy, but number of components of this Pelton wheel turbine are more. So each and every component is very much important as far as the working of Pelton wheel turbine is concerned. यहाँ पेल्टन व्हील टरबाइन के डायग्राम में आपको बहुत से कंपोनेंट दिखेंगे एंड एवरी कंपोनेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और हर एक कंपोनेंट अपनी अपनी एक अहम भूमिका अपना किरदार इसके रनिंग में निभाता है एंड वी विल स्टार्ट विथ पेनस्टॉक नाउ हियर what do you mean by penstock? You can see the name over here is penstock bend. Okay, bend means what? Bend is nothing but one kind of the deflection, one kind of the small kind of the change in the direction provided to the penstock. But what do you mean by penstock actually? The penstock is nothing but the pipe through which water is carried from dam to this Pelton wheel. So you can see here there is a pipe. This is the pipe. And from that particular pipe, water from dam is brought to the pipe. यहाँ डैम से जो वाटर है इस डायरेक्शन से लाया जाता है और यहाँ पेनस्टॉक में पेनस्टॉक के डायरेक्ट पेनस्टॉक से वो होता हुआ जो बकेट्स और वेन्स है उस पे जाके टकराता है मीन्स पेनस्टॉक इज नथिंग बट अ सिंपल पाइप थ्रू विच वी आर कैरिंग द वाटर फ्रॉम डैम टू that particular Pelton wheel. And that's why here one bend is provided because you are going to attach this pipe in this direction to the dam construction. And here one bend you need to provide. Bend से जो कुछ भी वाटर पेनस्टॉक से आता है वो पेनस्टॉक बेंड पे डिफ्लेक्ट होता है वो उसकी डायरेक्शन या पोजीशन चेंज करता है ओके नाउ द सेकंड पार्ट इज spear and wheel arrangement. So here you can see the spear and wheel arrangement exactly below the penstock bend. Okay, so you can see here this is the wheel arrangement, this is the wheel, and here you can see this is the spear arrangement. Okay, what do you mean by this wheel and spear arrangement? This wheel or spear arrangement is provided in the penstock, in the pipe where you are carrying water from the dam to the nozzle. And here the whatever wheel arrangement is there and spear arrangement is there, it is made in a such a way that the rotary motion of the wheel provide reciprocating motion to the spear. यानी जब आप ये व्हील घुमाते हैं तो ये जो स्पीयर का स्ट्रक्चर है वो आगे या पीछे होता है ओके नाउ व्हाई दिस व्हील एंड स्पीयर अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड ये क्यों लगता है आपने देखा है कि वाटर इज एंटरिंग into the penstock from the dam in this particular direction, and that water is allowed to come outside through the nozzle arrangement provided over here. यहाँ एक nozzle arrangement provide की है. This is the nozzle arrangement provided. Now ये व्हील और स्पीयर अरेंजमेंट ऐसा किया है कि अगर आपने क्लॉकवाइज व्हील रोटेट किया तो ये जो स्पीयर है वो आगे की तरफ जाएगा
यानी कि ये जो नोजल है, इस नोजल का जो ओपनिंग दिया है यहाँ, ये जो ओपनिंग दिया है, इस ओपनिंग में ये जो कोनिकल पार्ट है वो कोनिकल पार्ट इंसर्ट किया जाएगा या उससे पीछे लिया जाएगा। मीन्स whatever flow through nozzle is controlled by this wheel or spear arrangement. आपने व्हील क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो स्पीयर आगे मूव होगा, अगर आपने व्हील एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो स्पीयर पीछे होगा। स्पीयर जब पीछे होगा तो नोजल का जो ओपनिंग है वो बड़ा हो जाएगा और ज्यादा वाटर बाहर निकलेगा। स्पीयर अगर आगे की डायरेक्शन में गया तो आपका जो नोजल का ओपनिंग होगा वो थोड़ा क्लोज होगा, बंद होगा या बंद होने के जैसा होगा और उससे थोड़ा सा कम वाटर निकलेगा। सो टू कंट्रोल द फ्लो थ्रू द नोजल, this particular wheel and spear arrangement is very much important. The third component in this particular Pelton wheel turbine, it is not actually mentioned here, but I want to mention here that this is nothing but the nozzle. This is the nozzle. This is the nozzle here. And you know that what is the application of nozzle? Nozzle क्या करता है कि जहां से वाटर बाहर आता है वहां का जो एटमॉस्फेरिक वहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया नोजल की वजह से कम होता है। एक्चुअली द शेप ऑफ नोजल इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ नोजल। Here water is taken inside from left hand side and it will be sent outside through this direction. और अगर आपने देखा तो वाटर जहां से एंटर होता है वहां क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और वाटर जहां से बाहर निकलता है वहां क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होने की वजह से द लिक्विड इज गेट प्रेशराइज्ड, water is get pressurized and that pressurized water will be thrown on buckets or vanes. So nozzle name it has not provided here, but you just look carefully towards this figure. This part is known as a nozzle. I have shown it with the red mark. Okay, this is the nozzle. The next component is deflector. Okay, so deflector you can see here, this is the deflector. Deflector is nothing but one kind of the bended part. Okay, and this particular deflector is utilized to deflect the flow of water in the form of jet. ये जो डिफ्लेक्टर है वो जो बाहर निकलने वाला वाटर जेट है, वाटर का फ्लो है, उसके डायरेक्शन को गाइड करने के लिए लगा हुआ रहता है कि अगर आपके नोजल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपके स्पीयर और व्हील अरेंजमेंट में अगर कुछ प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं रह गया तो उस टाइम this particular flow of water or jet of the water and its direction is controlled by using the deflector. Deflector ऊपर नीचे आप मूव करके वो जो वाटर जेट है उस वाटर जेट को कंट्रोल कर सकते हैं। Then next part is nothing but the casing. You can see the casing over here. This is the casing, and you know now what is the casing. Casing is nothing but a simple cover provided or the structure which is covering the mechanism, and here the casing is made up of the concrete structure. Up till now whatever equipment we have seen in pump and compressor, you have seen that the casing is provided of the metal, but here in this Pelton wheel turbine the casing which is provided, it is made up of the concrete.
very much important point. And under this particular concrete structure, concrete covering, the water is collected, it is thrown to that particular runner, and whatever remaining water is there, it is taken outside through this particular casing. Then next very much important part is nothing but your braking jet or second nozzle. Okay, here you can see the braking jet, and braking jet is nothing but one kind of the pipe. If for maintenance work, or if you want to stop the working of the Pelton turbine due to some any reason, at that time this braking jet or the nozzle is utilized. एक बात ऐसी है कि आपको लगता होगा कि ये मैकेनिज्म पानी थ्रो होने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट होता है और इमीडिएटली बंद होता है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल में ये जो व्हील है उसका मूवमेंट है, उसकी जो रोटरी मोशन है वो स्टॉप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है. एंड इफ you want to do some kind of the maintenance of this Pelton turbine, आपको पेल्टन टरबाइन का कुछ मेंटेनेंस करना है, या आपके डैम में का जो पानी है उसका जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो वाटर लेवल बहुत ही डिक्रीज हो रहा है, माइनस में चला जा रहा है, और इन दैट केस यू वांट टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर पेल्टन व्हील टरबाइन स्ट्रक्चर, देन what is going to be happen? So this particular jet is coming into picture. Through this braking jet or through this nozzle, water is thrown on this particular runner. See, in this direction, water is thrown onto the runner. Actually, जो runner की direction है, वो direction इस दिशा में है. Okay, it is moving in anti-clockwise direction. And when you will throw the water from the braking jet or the nozzle, what is going to happen? It will strike on these buckets on totally opposite direction. बकेट के पीछे वाले डायरेक्शन पे वो स्ट्राइक करता है, और जब बकेट के पीछे वाले डायरेक्शन को वो स्ट्राइक करता है तो उसका जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे एक रेजिस्टेंस जनरेट होता है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से आपका जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होने वाला जो रनर है, वो रनर उसकी स्पीड धीरे 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 रिड्यूस हो जाती है, और एक इंस्टेंट ऐसा आता है कि जहां इट इज टोटली स्टॉप्ड. अंडरस्टैंड? सो टू एट द टाइम ऑफ द मेंटेनेंस और at the time of some problem, if you want to immediately stop working of this particular Pelton wheel turbine, then this braking jet or the nozzle we are using. The next part is nothing but runner. You can see this runner at the center, and it is nothing but, you are observing here in this particular picture, it is nothing but one kind of the circular disc, and on its peripheral structure number of double cupped bucket are fixed. And how that double cupped bucket are there, here you can see the picture of runner. These are nothing but the runner. Okay, so here you can see these buckets, these are nothing but the buckets. एप्पल का शेप जहां आपको दिखाई देता है, this apple shape structure is nothing but the your buckets. यहां आप देख सकते हैं, this is a bucket, this is the bucket, these are the buckets. Okay, and these buckets are fixed around the peripheral structure, around one circular structure on its periphery, and that particular circle or this circular structure is known as the runner. So these blades you can see are fixed,
एट इक्विडिस्टेंस पॉइंट, एक दूसरे से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे वो एक दूसरे से फिक्स किए हुए रहते हैं आउटर पेरीफेरी पे अपने रनर के. एंड दिस रनर इज प्लेइंग very very important role as far as your structure is going to be concerned, because ये रनर जब घूमेगा तभी इसके इनसाइड का जो शाफ्ट है ये घूमेगा. एंड दिस पर्टिकुलर शाफ्ट it has been fixed into the magnetic field, and when that shaft is rotating, the another end which is put in the magnetic field, it is going to cut magnetic lines, magnetic force lines. And when the magnetic lines are going to be cut by that structure, magnetic that electric current is going to be generated. That part, you know, what do you mean by generated, etc. You might have learned all these things in your 10th standard, 9th standard. So this is a very very simple structure. Just at exactly at the center of this particular runner, shaft has been provided. Now when we want to see the actual working of this particular Pelton wheel, here there is a small kind of the mechanism you can see. This is the actually runner, and it's on its outer periphery these buckets are fixed. When you will allow the water jet come and strike on the bucket here, this is the penstock, through penstock water jet is coming and it is just striking on these buckets, and buckets are rotating in anti-clockwise direction. So here the shaft arrangement is made, and you can see that with the belt drive this particular structure is attached to the power transformation system, and through that electricity is generated and bulb is ignited over here. So this is a very simple structure. हमें मैग्नेटिक फील्ड में एक स्ट्रक्चर मूव करना है. जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, एक सिंपल मैकेनिज्म है. लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कट करने के लिए जो शाफ्ट आपको रन करना है वो किसी दूसरे रोटरी मोशन से चला के कट करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो दैट विल बी आवर जनरेटर, दैट विल बी आवर टर्बाइंस. And especially in turbines, we are using the flow of water to run such kind of the runners or the components. रनर जो है वो रन करने के लिए जब हम वाटर का यूज करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, वाटर टर्बाइंस कहते हैं. And here you can see this mechanism. This mechanism is animated, it is moving, and you can see the bulb is ignited over here when it is rotating. So this is one kind of the simple mechanism. As far as this particular structure is going to be concerned, how it works. So first of all, water which is coming from the dam is allowed to flow through this particular penstock. There is a penstock, and from penstock water is entering from the dam in it. Then this water is tried to come out, and obviously the water is brought into the penstock with the gravity effect. Okay, ये जो रनर और ये जो पेल्टन व्हील का टरबाइन रहता है वो डैम के नीचे रहता है, कीप इन माइंड. So water is brought into the penstock by simply effect of the gravity. ग्रेविटी की वजह से वो जो वाटर है पेनस्टॉक में आता है क्योंकि वो नीचे के डायरेक्शन की तरफ होता है. देन वाटर इज ट्राइंग टू कम आउट थ्रू द फर्स्ट नोजल ऑन बकेट्स ऑफ रनर, एंड हियर spear and wheel arrangement is made. With the help of that, your
नोजल फ्लो इज एडजस्टेड, नोजल का जो फ्लो है वो व्हील एंड स्पीयर के अरेंजमेंट से एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद व्हेन वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल, देन विद द हेल्प ऑफ द डिफ्लेक्टर इट इज ब्रॉट इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। डिफ्लेक्टर का यूज करके उसी प्रॉपर डायरेक्शन में वाटर के फ्लो को, वाटर के जेट को लाया जाता है। और वो इसलिए लाया जाता है कि आपका जो वाटर जेट है वो डबल बकेट पे प्रॉपरली स्ट्राइक करे। ये जो आपने बकेट लगे हुए हैं, इस बकेट पे उसका जो वाटर का जेट है वो प्रॉपरली स्ट्राइक करे। मोस्ट ऑफ द फोर्स, मोस्ट ऑफ द प्रेशर of this particular water should be utilized properly to run the runner. So that's why बकेट पे उस नोजल का, बकेट पे उस वाटर जेट का जो नोजल से निकल रही है उसका स्ट्राइक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो डिफ्लेक्टर के डायरेक्शन से वो जो फ्लो है वो एडजस्ट किया जाता है। Then when jet of water is striking on your bucket is start rotating. Now in this figure, according to this figure, it will start rotating in anti-clockwise direction. Okay, and the shaft is attached to it. When runner is going to start its rotation, the shaft is also getting rotated, and that shaft is connected to the generator circuit so that electricity is produced. The braking jet structure is utilized in such kind of the Pelton wheel turbine when, for the maintenance or to avoid some kind of the problem, you want to stop the Pelton wheel turbine. So this is nothing but the working of your Pelton wheel turbine. Understand? Now I request you, please take your pen and just we will start its construction. I think you have not drawn this figure in your notebook. Have you drawn it? No, sir. No. Okay, no problem at all. I will provide you some time to you people. Just leave half an page to draw this diagram. Actually, this diagram I have drawn on the page only, and it's a snapshot I have taken. So from that, you will come to know that half page is more than sufficient to draw this structure. So leave that much space, and below that, write down Pelton wheel turbine. Pelton wheel turbine. Pelton wheel turbine consists of following elements. Consist of following elements. Consist of following elements. Consist of following elements. Consist of following elements. Number 1, penstock. Number 1, penstock. 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 Penstock is the pipe. Penstock is the pipe. Penstock is the pipe. Penstock is the pipe which carries water, which carries water
which carries water from dam from dam from dam from dam to the turbine, to the turbine, to the turbine. Second point, spear wheel arrangement. Spear wheel arrangement. Spear wheel arrangement. Next line. With this arrangement, rotary motion of wheel, rotary motion of wheel, with this arrangement, rotary motion of wheel is converted into reciprocating motion, reciprocating motion, reciprocating motion. This arrangement helps to block or unblock the nozzle, the nozzle. Third point, nozzle. Third point, nozzle. It is a mechanical device. It is a mechanical device whose cross-sectional area
is reduced at outlet is reduced at outlet. This helps to increase velocity. This helps to increase the velocity of the water. Next point, deflector. Deflector. This element deflects flow of water which is in the form of jet. 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 Next, casing. Fifth point, casing. Casing. It is concrete covering. It is the concrete covering of the turbine. Next point, hydraulic brake or braking jet This is also a nozzle. This is also a nozzle. This is also a nozzle which will help to stop the rotary motion of the runner at the time of maintenance.
Seventh point, next point, seventh one, runner, 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 in bracket, rotor of turbine, in bracket, rotor of turbine, in bracket, write down rotor of turbine. सर वाटर कहाँ से एग्जिट करता है सर, जो उसमें लेते हैं? कौन सा? वाटर तो जो आता है ना सर, वो एग्जिट कहाँ से करता है फिर? ये नीचे से, यहां से, ये मेरा, जस्ट मिनट, जब यहां से स्ट्राइक होता है तो यह नीचे गिरता है और वहां से इधर इस डायरेक्शन से उसे बाहर निकाला जाता है। ये केसिंग होता है एक्चुअली अंडर द ग्राउंड, वहां गटर्स जैसा स्ट्रक्चर निकाला हुआ होता है, नीचे एक पाथ प्रोवाइड किया होता है। जब वाटर नीचे आता है तो इस डायरेक्शन से इस केसिंग से बाहर निकलता है, वो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ये ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे का वो स्ट्रक्चर है, पानी पड़ने गिरने के बाद उस जो गटर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं उससे बाहर निकाला जाता है। ओके, यस सर, ओके। पानी अगर इसमें भरता रहेगा तो वर्किंग उसका बंद हो जाएगा ना, ग्रेविटी की वजह से जो कुछ वाटर यहां स्ट्राइक होता है वो नीचे आता है। रनर इन ब्रैकेट रोटर ऑफ टरबाइन, 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 रोटर ऑफ टरबाइन। A circular disc at its circular disc at its periphery, at its periphery number of double cup, number of double cup, number of double cup shaped, number of double cup shaped buckets, buckets are fixed, are fixed are fixed at equal distance,
at equal distance. At equal distance. Equal distance. Next component, shaft. 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 It is rotated. It is rotated. It is rotated with the help of runner. With the help of runner and blade arrangement. Help of runner and blade arrangement full stop. The shaft is fitted. The shaft is fitted in magnetic field. In magnetic field due to which when the shaft is get rotated, due to which when the shaft is get rotated, it produces electricity. It produces electricity. It produces electricity. It produces electricity. Produces electricity. So now, friends, diagram is in front of you. And as recently the doubt was asked, so to remove that doubt, I have made some small correction in this diagram. Actually, if you will not make it, then also no problem, because you are going to study the turbine, not all mechanism. But still, where water goes after striking on this runner, so I had provided one direction to you, and there I have written water to tail race. So this diagram, you will have to copy it down in your notebook, where you have reserved some space for drawing the construction of Pelton wheel turbine. So I request you, please draw it at that particular open space. Okay. After drawing this particular figure, we will see its working. Already I have explained the working to you. Just I will provide you the details, or I will provide the explanation regarding with the working in the written format. So you draw this figure. Hello.